Okay, अस्सलाम वालेकुम. From the ladies, thank you so much. Ladies should support me because I have a big task in front of me. Because I am speaking right after my wife, who was a previous speaker. So भाई लोग प्लीज आप सपोर्ट करो और शुरू में ताली मार दो. Thank you. So should I conclude? मेरा काम हो गया, मुझे तालियां मिल गई. अस्सलाम वालेकुम. ये आपको कुछ और जानना है. How many people over here are genuinely interested to make money? कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए? तो बनाना आधे लोग को है और आधे लोग को बढ़ाना है. अगर आपके पास 10 रुपए हैं, आप चाहते हैं कि वो 15 हो जाए या आप चाहते हैं कि वो 5 हो जाए? अच्छा, कौन चाहता है कि आपके 10 रुपए 15 हो जाए? यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते. ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि 10 रुपए हमारे 8 रुपए हो जाए? 10 रुपए हमारे 8 रुपए हो जाए. कोई रीजन है? एनी रीजन? आप चाहते हैं, you want that to happen or it happens? It happens, right? Good. अगर आपके पास आज 10 रुपए हैं, अगले साल वो अबाउट 10% से कम हो जाएगा अपने आप. सिंपल है. अगर आपके 10 रुपए को आपने इन्वेस्ट नहीं किया, वो अपने आप वैल्यू में घट जाएगा अपने आप. तो हमारा प्रिंसिपल एम ये है कि हम अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करें और एनहांस करें. हम हमारी दौलत को बचाएं, प्रिजर्वेशन, और उसको बढ़ाएं. ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, शरिया में कोई दिक्कत नहीं है अमीर आदमी बनने के लिए या अमीर औरत बनने के लिए. सॉरी, शरिया या इस्लाम हमें दौलतमंद बनने से रोकता है, राइट? अरे आप लोग तो पहले जल्दी हो जाए. मैं गरीब मर्दों से पूछ रहा हूँ. ठीक है, लेडीज आर ऑलवेज रिच, राइट? ओके, बहुत सिंपल. मेरा एक ऐप है जो आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, जो हलाल इन्वेस्टिंग के ऊपर है. I am not going to talk about Islamic finance, principles of Islamic finance. कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला हूं मैं आज. मैं आपको सिंपल, प्रैक्टिकल, रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आज के दिन में आप यूज कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशंस हैं, और इंशाल्लाह कोई पॉलिसी स्कीम नहीं होगी. क्योंकि पॉइंट नंबर 1, हम वही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो शरिया कंप्लायंट हो. पॉइंट नंबर 2, हम वही प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं हमारी ऐप पे जो रेगुलेटेड हो. रेगुलेटेड का मतलब सरकार की तरफ से उस पे परमिशन होनी चाहिए ये प्रोडक्ट आने के लिए. सरकार की तरफ से लाइसेंस होना चाहिए ये प्रोडक्ट को चलाने के लिए. आप लोग बहुत सरप्राइज होंगे कि ऐसा क्या बताने वाले हैं इन दिस इकोनॉमी वेयर वी लिव. ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं भी जो सरकार कहती है कि ये अलाउड है और सरकार की तरफ से ये परमिटेड है और सरकार ने इसको परमिशन दी है और ये हलाल भी है. माय फ्रेंड्स, देयर आर टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टन्स. शुरुआत है लेकिन है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इस पूरी इंडस्ट्री में कितने पीछे हैं. आप सुनते रहते हैं कि मुसलमान बहुत पीछे है. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताऊंगा कि हम कितने पीछे हैं और हम कितनी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
The next slide. Okay, so let's talk money. The next one. Next one. Okay, एक पोल ले लेते हैं यहाँ पे. स्क्रीन उतना क्लियर नहीं है. Yes, I don't want light on me. ठीक है, मैं पहले से बहुत हैंडसम हूँ. My wife will agree to that. It's a mix of English and Urdu. Yes. इसमें हम लोग पोल ले लेते हैं. Let's take a poll. How much money do we think we have per head? यहाँ पे हर आदमी के पास 7,000 रुपए सेविंग्स होगी. 7,000 हाथ उठाना पड़ेगा. मैं यहाँ खड़ा हूं, आप लोग बैठे हैं, कम से कम हाथ तो ऊपर कर रहे हैं. ठीक है, ओके. 7,000 सबके पास है. ओके, सबके पास डेफिनेटली है. ठीक है. ऑप्शन बी 15,000 होंगे हमारे पास. 3 लोगों के पास है, 5 लोगों के पास है. लेडीज के पास कुछ नहीं है, वो बेचारे मिस्कीन है. ठीक है, पैसा सब हमारे पास है. ऑप्शन सी 30,000 होंगे हमारे पास. अब 30,000 मैंने वैल्यू लास्ट में आके स्टॉप क्यों किया हुआ है? आई स्टॉप एट 30,000 बिकॉज हमारी सिल्वर में इस साल ज़कात जो है वो 1.5 लाख की है. साहिब निसाब बनने के लिए टू बी एलिजिबल टू पे ज़कात, सिल्वर का रेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं सिल्वर के हिसाब से बता रहा हूं. 1.5 लाख ऑन एन एवरेज इज द कट ऑफ कि इसके ऊपर आपको ज़कात भी देनी है, इसके नीचे हमें ज़कात लेनी है. इसके नीचे हमें ज़कात लेनी है. अगर हमारे पास 30,000 रुपए भी है तो हम ज़कात लेने वालों में से हैं, देने वालों में से नहीं है. ठीक है, मैं एक्साइटेड हूं कि नीचे न गिर जाऊं. ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं. 30,000. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अगर हमारे पास 7, 15 और 30,000 होते तो हमारे पास क्या वैल्यू होती वेल्थ में? अगर हर आदमी के पास मुसलमानों में 7,000 रुपए होते, और ये मैं सिर्फ अडल्ट्स की बात कर रहा हूं, जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो लोग 18 के ऊपर हैं, उनकी बात कर रहा हूं. पीपल हु आर अबव 18 years old, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. If we had 7,000 rupees, we had 12 crore of the population. The next slide. We would have 1,50,000 crores. 12 crores in 7. If we had 15,000, we will have 3,30,000 crores. 3,30,000 करोड़ हमारे कौम में होते इन्वेस्टमेंट्स में. अगर हमारे पास 30,000 है, जो साहिब के हिसाब से नीचे है, आप टेकन ओनली 20% ऑफ दैट, तो भी हमारे पास 6,60,000 रुपीस होते हैं. एक रियलिटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास है कितना, हमारी वेल्थ कितनी है, और हमने स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में कितना पैसा लगाया है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. हियर इज द नंबर्स. पूरी म्यूचुअल फंड, आपने सचिन तेंदुलकर का ऐड देखा होगा, आपने कपिल देव का ऐड देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं? हर आदमी को पता है. मेरे 11 साल और मेरे 8 साल के बच्चों को पता है. मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड, वो कहते हैं सही है. होता क्या है म्यूचुअल फंड? दे डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट म्यूचुअल फंड सही है. ठीक है, इजी सॉल्यूशन है. म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, रिटर्न आता है. बड़े-बड़े एसेट मैनेजर्स चलाते हैं. इंडिया में 4,000 म्यूचुअल फंड्स हैं. 4,000. इट्स अ बिग इंडस्ट्री. आज के दिन में फिक्स्ड डिपॉजिट, जो इंडिया का फेवरेट सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, the amount of money in mutual funds has surpassed the money in fixed deposits now. So people are investing in the markets compared to investing in a fixed return product which is fixed deposit. अब हम देखते हैं 8 लाख करोड़ है म्यूचुअल फंड्स में. There is 8 लाख करोड़. और शरिया में कितने हैं? तो the previous slide. Yeah, this one. 82 lakh crores in mutual funds में, not 8 lakhs. 82 lakh crore. 82 lakhs उसके बाद में करोड़ है. मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसके बाद 7 जीरो है. ये नंबर के बाद 7 जीरो है. ओके? हलाल में कितने हैं? शरीयत कंप्लायंट में कितने हैं? सिर्फ 4,329. मुझे उर्दू में बोलना नहीं आता. ठीक है?
4329 हमारे पास होता है। इसका मतलब अगर मैं डिवाइड करूं 12 करोड़ 18 साल के ऊपर लोग हैं इंडिया में, उन्होंने सबने जान लगा के कितने पैसे जमा किए? 4329 पर हेड कितना आ रहा है? 358 रुपीज। ये है हमारी रियलिटी। आप लोगों ने मुझे मिलाकर सिर्फ 350 रुपए पर हेड जमा किए हैं और हम यहां बैठे हैं बोलने के लिए कि यहां पर कोई इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, यहां पे कोई इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो हम करें तो क्या करें? राइट? 30 years का होगा कैसे? Shariah compliant mutual funds are available in India for the past 30 years. There is a fund called Tata Ethical Fund, which is running in a fully Shariah compliant manner. We have also looked into that. That fund is running for the past 30 years. और 30 साल में हम लोगों ने 4,329 रुपए जमा किए करोड़। 358 पर हेड आता है। हमारा कंट्रीब्यूशन है 0.05%। पॉपुलेशन में कितने हैं? 20%। इन्वेस्टमेंट में कितने हैं? 0.05। मतलब 100 रुपए में 5 रुपए नहीं, 100 रुपए में 5 पैसे। That is our contribution to the investing space. 100 रुपए में 5 पैसे और पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से 100 रुपए में 20 हम हैं। मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स बताता हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ठीक है, इन दिस स्लाइड होगी। अगर हम कहते हैं कि भाई हलाल इन्वेस्टिंग में दम नहीं है, रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, कौन बोलता है? ये पब्लिश्ड डेटा है। 15% CAGR मिला है, 15% रिटर्न ऑन एन एवरेज। और सिर्फ पिछले 5 साल का कह रहा हूं, पूरे 30 साल का लगाया नहीं मैंने। पिछले 5 साल में 15% रिटर्न मिला है। लेट्स लुक एट अनदर प्रोडक्ट। चलो म्यूचुअल फंड्स छोड़ देते हैं। लेट्स लुक एट द सेकंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? व्हिच इज ULIPs। ULIPs इज अनदर कैटेगरी जो इंश्योरेंस लिंक्ड होता है, बट में फंड होता है। वो फंड में भी पैसे लगते हैं। वो फंड भी शरिया कंप्लायंट हो सकता है। इंडिया में 3 साल पहले हम लोगों ने एक कंपनी के साथ मिलके, लिस्टेड कंपनी के साथ मिलके शरिया कंप्लायंट ULIP लॉन्च किया। कितने पैसा है? 310 करोड़ रुपए। 3 साल, which is not bad, but आए हैं पर हेड कितना है? 26 रुपए। 8 लाख करोड़ है, उसमें से हमारे से 310 है। और ये 310 में हलाल स्कीम की बात कर रहा हूं। इसमें नॉन मुस्लिम्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स एन ओपन फॉर ऑल स्कीम। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पूरे 310 अपने ही हैं। उसमें भी अगर आप देखें सिर्फ 26 रुपए हमने कंट्रीब्यूट किया है पर हेड, सिर्फ 26 रुपए। दुख हो रहा है? किसको दुख हो रहा है? हो रहा है। डॉक्टर्स भी यहाँ पे दुख हो रहा है तो बताओ, ठीक है? हो रहा है ना दुख? समझ में आ रहा है कि हम कहाँ हैं? हाँ, इसमें भी रिटर्न जो है पिछले 3 साल का 17% का है। यहां पर भी कंट्रीब्यूशन 1 पैसा कम है। 100 रुपए में 4 पैसे हमारा कंट्रीब्यूशन है। और हम यहां बैठे हैं कि भाई बताओ क्या किया जा सकता है? अरे बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? What can we do is what I want to speak about now as well. Let's take a comparison. Next slide. हाँ, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हमारे 2 फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो स्पेशली बैंगलोर में, स्पेशली हैदराबाद में, स्पेशली बॉम्बे में बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय हैं। बहुत लोग हंस भी रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। ये हमारी फेवरेट स्कीम है ना,
इसमें पैसा लगाना है हमको। कितने लगाए हमने? 7,500। और कितने साल में? सिर्फ 6 से 8 साल में। ये 7,500 ऑफिशियल नंबर है। आपको हमको पता है कि इसमें एक और एक जीरो लगा देना है, पहले क्या बाद में? बाद में, राइट? आराम से लगेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं सबको कंपेयर कर रहा हूं। जो पॉन्जी स्कीम्स में 7,500 करोड़ लगे, 6 से 8 साल स्कीम चली, आपका पैसा पूरा खत्म। कैपिटल इज लॉस्ट, मनी वैनिश। ओके, कंपेयर दैट टू शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें मैंने 1 करोड़ ऐड कर लिया। 4329 से 4,300 बोलना आसान है मेरे लिए, तो 4,300 करोड़ लग गए उसमें। पिछले 30 साल से अवेलेबल है। रिटर्न क्या है? 15%। 15% अगर CAGR है, इसका मतलब 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। 5 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है। ओके, money doubled in 5 years. It's 4.9 actually, but let's say 5 years. Compare that to Shariah units. Units are unit-linked insurance policies, which is again linked to a fund. That fund is managed in a fully Shariah compliant manner. Don't worry about the Shariah compliance part. Let's just go ahead and think what all can we do. 3 साल में 17% money doubles in 4.4 years. ये कंप्लीटली शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। कोई अनोखी स्कीम नहीं है, कोई ग्रेट फंड मैनेजर्स नहीं है इसमें। ये नॉर्मल स्कीम्स हैं जो हर आदमी के पास अवेलेबल है। यू कैन एक्सेस इट, और अभी इस्लामिकली आ गया है, वहां पे आराम से आप ले भी सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। ये हमारी पेनफुल कंपैरिजन है कि हम कहां पर हैं। 326 रुपए और 26 रुपए हमारी कंट्रीब्यूशन है। ये इंडस्ट्री है। इन्वेस्टमेंट स्पेस में, रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट स्पेस में हमारा 326 रुपए और 26 रुपए कंट्रीब्यूशन है। और हम यहाँ खड़े हैं कि भाई हम 20% पॉपुलेशन है और हमारे लिए प्रोडक्ट्स नहीं है। अरे कौन लाएगा आपके लिए प्रोडक्ट? मैं नहीं आऊंगा अगली बार। मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ वहां से यहाँ आने के 326 रुपए से ज्यादा पेट्रोल लग गया मेरी गाड़ी में। करेक्ट? हम अगर सीरियस हैं, हम अगर नेशन बिल्डिंग में सीरियस हैं, हम अपनी सेल्फ वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं और एनहांस करना चाहते हैं, तो लेट्स बी सीरियस अबाउट दिस एंड लिसन टू व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन। एक नेक्स्ट स्लाइड। ये आपके दिमाग में बात आएगी होगी। वो बीच में जो बंदा बैठा है मैं हूं। चाय और पकौड़े खाते हुए हम लोग भी एक बार डिस्कस करते थे कि कहां कोई बैंकिंग टाइप इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल है इंडिया में। आप बात कर रहे हैं 326 की और 26 रुपए की। लगाए तो कहां लगाए? बताइए ना। बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी का अभी बताते हैं। नेक्स्ट सर, आपका जवाब इस्लामिकली ऐप में है। जो भी सवाल आपके दिमाग में आए, चाहे आए नहीं आए या मैंने प्लांट किए, इफ आई प्लांटेड द आइडियाज इन योर हेड, यस आई हैव प्लांटेड द आइडिया इन योर हेड, बट व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स यू आर लुकिंग आउट फॉर, दे विल बी अवेलेबल ऑन द इस्लामिकली ऐप। लेट्स गो नेक्स्ट। इस्लामिकली ऐप की एसेंशियल चीजें क्या है? व्हाट इज द की थिंग्स ओवर हियर? फर्स्ट, we only present those products which are regulated by the appropriate regulator. That means if it is an equity product, the regulator is yes, good. If it is an insurance product, the regulator is IRDA. If it is a mutual fund product, it is a sister of SEBI, which is AMFI. If it is a PMS product, then the regulator is again an authority called PMSD. So on Islamicly app, you will only find those products which are regulated by SEBI, or if the regulation doesn't exist, it complies with the regulations as given by the Reserve Bank of India. There will be no product which is non-regulated
there will be no product where an investment manager takes money from the investors and invests money without a license from the government of India. Every product is market linked, every product has the same assurances on the safety and security aspect as would any other banking product be. Like be a product issued by State Bank of India, product issued by HDFC, product issued by, let's say, MIC or any financial institution in India, our products available on Islamicly app have the same level of assurance on the safety aspect. The next is, the second important thing that we do is we ensure the highest level of Shariah compliance. Now here is another problem that we have solved. I am going to be very blunt about it. मैं open बात करता हूँ. मैं कोई Sharia scholar नहीं हूँ, but I have worked in this industry for the past 20 years. Out of India itself, not abroad. इंडिया में ही मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और आपको ये सुन के शायद खुशी होगी और डेफिनेटली खुशी होगी कि दुनिया भर में Shariah compliant investing in equity markets, 65% of the entire research is linked to our desk. और वो बंदे बैंगलोर में बैठते हैं, they sit in New York City. 65% of the global stock market, which is invested in a halal manner, the backing research of it is done from a company in Bangalore, and I have the privilege of running that company. The value is $100 billion US. On Bombay Stock Exchange, we had an index which is linked to us. We do not do that anymore. On the National Stock Exchange also we had an index which was linked to us. We don't do it anymore. But we power the two largest indexes in the world, which is the S&P and the Dow Jones. The global Sharia compliant indexes are run by us from a Sharia perspective. Let's move on to the next one. These are the scholars that we work with. If you have some time, do go back and read about these scholars. So the chairman of our Sharia board is Dr. Abdul Hadi. He's from Saudi Arabia. He's got 35 to 40 years of experience in advising financial institutions as to how can they merge Sharia with existing financial products. He's been on the Sharia boards of, you name it. Citibank, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers, us, and we've been working with him for the past 26 years. He is an authority on Sharia compliance. Authority. Anything, the accounting standards which came to the industry, the Sharia governance standards which came to the industry were built by this guy, and we work directly with him. We also have another scholar called Sheikh Nazir Hamad. He's from Syria. He's from Al-Azhar University, one of the finest scholars of Islamic finance I've seen. Then we are also joined by Muhammad Amin al-Taqan, who's from Kuwait. We had another very reputed scholar on our board. His name was Dr. Sattar Abu Hudda. Dr. Sattar Abu Hudda is very well known in the Indian subcontinent as well, because he's got a lot of students who came to the Indian subcontinent. But unfortunately, he passed away during COVID. He worked with us for the past 20 years. So this is the level of Sharia governance that we have. The best of the best scholars who have real experience in current financial markets also have a real experience on the Sharia side. And that's very important. If you see Dr. Al-Hadi, he does not have a PhD in Islamic investing or Islamic finance or fiqh al-muamalat. He doesn't have a PhD in that. His PhD is in economics. His idea is, if we do not understand the current financial system, how can we bring Sharia into it? A lot of mismatch happens when scholars do not understand, unfortunately, do not understand how the financial product works. And because they do not have a clear understanding as to how the financial product works, there are mistakes in approving them. And obviously, people like me who are money-minded, people like me who run corporations, people like me who want to be rich, will probably try and not give the true picture to the Sharia scholars.
but they need to be smart themselves to figure out what is the economic system, how a financial product works, and then give a fatwa whether it is compliant or non-compliant. So Islamicly app gives you regulated products as well as rigorously screened Sharia compliant products. Next. So the first product that we have on the app is a very simple product which tells you in real time, globally, which stocks are Sharia compliant, which stocks are not. This as an area we have massive expertise in, and as I said, we control or we advise about 65% of the entire global market. This has been going on from Bangalore, entirely from Bangalore, and we have been in the back seat of all of this. So while we are doing this 20 plus years of research, we thought during COVID कि भाई बहुत मेहनत हो गई, बहुत सारे फतवे हो गए और ठीक ठाक पैसा कमा लिया. My wife will disagree, ठीक है, बट ठीक ठाक पैसा कमा लिया, एटलीस्ट कंपनी ने तो कमा लिया, लेकिन आपको और मेरे को इस पूरी नॉलेज का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ. Hundreds of Sharia court meetings have taken place, hundreds of minutes of meeting, hundreds of fatwas have been issued. ये कंपनी को कैसे एनालाइज करेंगे? How do we analyze the business model of Infosys? How do we analyze the business model of Reliance from a Sharia perspective? How do we analyze the business model of payment companies? How do we analyze the business models of Islamic insurers, non-Islamic insurers, buy now pay later companies, Amazon's, Apple? ये सब के बिजनेस मॉडल्स को शरिया के हिसाब से रिसर्च किया गया है. इन सब का फायदा आप और मुझे तो नहीं हुआ. इन सब का फायदा बैंक्स को हुआ. बैंक्स ने प्रोडक्ट्स आगे बढ़ाए और अमीर अमीर लोगों को बेच दिए और उन्होंने अपनी फीस कमा ली. इस हाई फीस एनवायरनमेंट से बचने के लिए हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट निकाल दिया, which is Islamicly. अगर मैं आपको बोलूं सेम डेटा, कौन सा स्टॉक हलाल है, कौन सा स्टॉक हराम है. हलाल हराम मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी है. अदरवाइज वी डोंट यूजुअली यूज द वर्ड हलाल एंड हराम, वी यूज द वर्ड शरिया कंप्लायंट एंड शरिया नॉन कंप्लायंट. In the Q&A section, if you want more information as to how do we adjudge a stock to be Sharia compliant and how do we adjudge a stock to be non-compliant, I can talk about that. But very, very simply, the same amount of data which gets into the biggest financial institutions in the world, वही same data आपके ऐप में 0.1% cost में मिलता है. 0.1% cost. So we have brought down the cost from by 99.99%. सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए तारीफ जो हमारी 20-25 साल की रिसर्च है, that is benefiting the ummah, that benefits you and me, and we do it through a digital mechanism which is Islamicly app. So Islamicly app को कौन सा स्टॉक हलाल है वो मिल जाएगा, रियल टाइम मिल जाएगा. दूसरी बात, हलाल स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन के बारे में अच्छे पानी भर लेते हैं. समझने के लिए कैलकुलेट करना तो दूर की बात है. हमारे ऐप पे कंप्लीटली ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन मिलेगा आपको. इसका मतलब कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया, उसमें जो इम्प्योर इनकम है, जो हराम इनकम है, उसका वैल्यू भी आपको दिखा दिया जाएगा. और ये दुनिया के किसी भी ऐप में आपको नहीं मिलेगा. दुनिया में किसी के ऐप में नहीं मिलेगा. दुनिया में हमारी तरह कोई और ऐप है ही नहीं, और बनने के लिए 20 साल की पुरानी मेहनत करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे आना पड़ेगा. So we are a class apart, we are institutional in our understanding, and we are trusted by the biggest of the biggest financial institutions in the world. So yes, हम उर्दू में बात कर रहे हैं. Yes, we are speaking to each other, but we have been, as I said, advising more than $100 billion. It's not easy. There's tons of competition, but we compete against that, and we are the global number one in that. Let's go to the next product.
Yes, in India, we are controlling about 1,000 plus crores. Islamicly app got launched just a couple of years back during COVID, by the way. With very few users as well, we still have 1,000 plus crores of public money which is linked to our app. That is just under advice. On the institutional side, on the B2B side, we have 100 plus billion that we control. Next one. This is more of the same stocks. Next one. We also have, चलिए अगर आपको खुद से चॉइस नहीं आता है कि भाई मुझे नहीं पता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, I don't have the expertise, I need advice and guidance from somebody. So we have partnered with a good SEBI registered asset manager called Green Portfolio. They are Gurgaon based. They have a SEBI license, a research analyst. They do have an AIF license and they have a PMS license as well. We launched this small cases. A lot of people understand small cases as well. We launched this portfolio about 2 years back. In 2 years, it has given cumulatively 100% plus return. And this is market linked. This data is available in the market. We can't look up these numbers. This is a SEBI regulated product. The returns data has to be given as per SEBI norms. The investment is in your own custody. पैसा आपके पास ही रहता है, वो उसको एडवाइस करते हैं आपको, and with a click of buttons जो टैग बना हुआ है, आप उसमें एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं. As I said, हमारे सारे products are mostly self custody. Self custody के मतलब कि वो की जो मिल्कियत है वो आपके पास ही रहेगी हमेशा से, कोई लेके भाग नहीं सकता उसको. इट विल ऑलवेज बी इन योर कस्टडी. सो ग्रीन पोर्टफोलियो ने स्मॉल केस लॉन्च किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे, शरिया कंप्लायंट. There are thousands of investors in this and people have made 100% plus return in the past 2 years. This number is available on the internet. This number is available on the Green Portfolio website also and they are SEBI registered. That would mean कि अगर मैं कोई नंबर गलत बोल रहा हूँ तो SEBI हम पे केस कर सकते हैं. So the numbers are absolutely correct and कोई aggressive portfolio नहीं था. कोई ऐसा नहीं था कि भैया छोटे मोटे पहली स्टॉक में लगा दिया, वो भाग गया स्टॉक इसलिए 100% रिटर्न मिला. स्टेबल बड़े बड़े नाम जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड स्टॉक्स हैं उसी में इन्वेस्ट किया गया, उसी में एडवाइस किया गया and people have made in a Shariah compliant manner 100% plus return in past 2 years. ये सब हमारे पास अवेलेबल है. तो मैंने स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया, मैंने पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया. अब जिन हजार के पास 50 लाख रुपए के ऊपर पैसा है, they can also come in another SEBI registered scheme which is called a PMS. वो भी Shariah compliant है, उसका भी रिटर्न डिसेंट है. Let's go next. Yeah, this is next. Okay. अब आ जाते हैं सिंपल से काम पे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है. इंडिया में जब 4000 म्यूचुअल फंड हैं, तर 4000 प्लस म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, पर शरिया कंप्लायंट कितने हैं? सर्टिफिकेट तो 2 के पास है, लेकिन बोलते हैं 5. सर्टिफिकेट 2 म्यूचुअल फंड्स के पास है, बाय द वे, क्वांटम के पास है और टाटा टेक्निकल के पास है. ठीक है. अभी रिसेंटली कल परसों में एक और लॉन्च हुआ है यूटीआई. अगेन यूटीआई द गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी. यूटीआई ने भी शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है और हम यहाँ पे कहते हैं कि नहीं कुछ सरकार हमको सपोर्ट नहीं करते. कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आज के बाद हम लोग भी नहीं बोलेंगे. यूटीआई ने 2 दिन पहले शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया सर्टिफिकेट के साथ और बोल रहे हैं वो शरिया कंप्लायंट है, तो कोई प्योर एथिकल ये सब नहीं बोल रहे हैं. दे आर टॉकिंग क्लियरली दैट दिस इज शरिया कंप्लायंट. बट 4000 में से सिर्फ 5 ही हैं. हाउ डू वी एंटर दीस थिंग्स? व्हाट वी हैव डन इज फाइनेंशियली क्रेडिटेड ट्रैकिंग पोर्टफोलियोज ऑफ एवरी म्यूचुअल फंड इन इंडिया. आपको कोई भी म्यूचुअल फंड पसंद हो, उसका इन्वेस्टिंग थीम पसंद हो, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं कर सकते क्योंकि वो शरिया कंप्लायंट नहीं है.
हमने उसको काट के उसके हलाल स्टॉक्स निकाल के उसको रीवेट करके फाइनेंशियली इंजीनियर करके वी क्रिएटेड पोर्टफोलियोज व्हिच ट्रैक द म्यूचुअल फंड and give you the similar returns and the mutual fund but in a fully 100% Sharia compliant manner. तो भैया आपके लिए इस्लामिकली ऐप के ऊपर हर म्यूचुअल फंड अवेलेबल है जो इंडिया में लिस्टेड है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना नहीं है, आपने उसके स्टॉक्स में पैसा लगाना है जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करता है। इसलिए हम उसको कहते हैं मून्स। मून्स बिकॉज अ मून डजंट हैव इट्स ओरिजिनल लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। हाँ, ये हमारा चांद तारा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बट इट लुक्स सिमिलर एंड इट इज फिटिंग टू मेथोडोलॉजी। तो इस्लामिकली मून्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समबडी एल्सेस इंटेलिजेंस इन अ शरिया कंप्लायंट मैनर। हम लोग स्टार्स भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। स्टार्स इज लाइक अ ग्रीन पोर्टफोलियो which has an original light, the fund manager's original intelligence is built into it. That is called a star because the star has its own light. So stocks हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, मतलब पोर्टफोलियोज हो गए, मैनेज पोर्टफोलियोज हो गए, अमीर लोगों के लिए पोर्टफोलियोज हो गए। 4 प्रोडक्ट्स तो मैंने अभी बता दिए आपको जो शरिया कंप्लायंट है एंड अवेलेबल एज पर रेगुलेशन। मैं कोई भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करूंगा जिस पे रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। तो हमने सेविंग स्कीम भी निकाली है बिकॉज हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट तो ठीक है, लेकिन आज आप और हम कर क्या रहे हैं? आज आप और हम 2 चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी 3 चीजों में। एक तो शादी में खर्चा, ठीक है, उसको मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब 2 चीजें बच गई, which is रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स रियल एस्टेट। और सो नेक्स्ट साइट। हम क्या कर रहे हैं? साइटों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और दूसरा सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरह का सोना, ये वाला भी और गोल्ड भी, ठीक है कि नहीं? Muslims love gold and Muslims love investing in real estate. अभी यही एरिया आप देख लीजिए एसबीआई के आसपास। I was just telling a friend of mine, 15 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, किसी ब्रोकर ने मुझे दिखाया था, मुझे भाई ने दिखाया था कि भाई ले लो साइड यहाँ पे। मैं क्या बोलता भाई जंगल में कौन लेगा भाई, ठीक है। हाँ, जंगल देखो क्या हो गया माशाल्लाह। क्यों? अपने आप नहीं हुआ, बिकॉज हम लोगों को रियल एस्टेट से मोहब्बत है, हम लोगों ने ये पूरा एरिया बसाया है। ये एरिया कमन अली पूरा एरिया हम लोग ने बसाया है। So we do have money by the way, don't worry. अब हमने डिजिटल गोल्ड लॉन्च कर दिया है, which is small level starting डिजिटल गोल्ड आप में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। हमने ये भी नोटिस किया, हम आज के दिन में सोना खरीद कैसे रहे? How are we buying gold today? Either we have a lump sum money कि 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 हमारे पास हैं, लाख रुपए हमारे पास हैं, हम सुनार की दुकान पे गए, ज्वेलरी सेलेक्ट किए, पैसा दिए, लेके आ गए। आज के दिन में बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 15,000 पर ग्राम के ऊपर चला गया सोना, 15,000 पर ग्राम। तो 15,000 रुपए भी हमारे पास शायद नहीं होते 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए। आज के दिन में अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं तो ज्वेलरी स्टोर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 ग्राम गोल्ड है वैसे, लेकिन ज्वेलरी स्टोर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा 15,000 रुपए। हाँ, तो हम फिर क्या करने लगे? सारे गोल्ड की दुकानों में हम लोगों ने किस्तें लगाना शुरू कर दी। किस्तें दे रहे हैं हम लोग, 10,000 की किस्तें, 12,000 की किस्तें, 5,000 की किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स पे गोल्ड हम खरीदना शुरू कर दिए। ये इंस्टॉलमेंट में खरीदा हुआ सोना इस्लाम के हिसाब से गलत है। मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, इसलिए मैं इसको हराम नहीं बोलूंगा, वो मेरा राइट नहीं है। लेकिन किस्तों पे खरीदा हुआ सोना, जो किस्तों वाली स्कीम आजकल सुनार की दुकान पर चल रही है, बड़े बड़े ब्रांड्स में भी चल रही है, ये दुकान में भी चल रही है जो नीचे है, अब बाहर जाते हुए दुकान है, यहां भी चल रही है।
चाहे मुस्लिम प्रमोटर्स हो या नॉन मुस्लिम प्रमोटर्स हो, किस्तों वाली स्कीम गोल्ड की वो हमारे शरिया स्कॉलर्स के हिसाब से जायज नहीं है। आप अपने मुफ्ती ग्राम से भी पूछ सकते हैं। किस्तों वाली स्कीम जो चल रही है इंडिया में वो जायज नहीं है, किसी भी एंगल से जायज नहीं है, किसी भी कोने से जायज नहीं है। एकदम सरासर साफ बात बोल रहा हूं, यहां खड़े रह के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। जब हमने ये देखा कि पूरी की पूरी कौम लगी हुई है किस्तों में सोना खरीदने के लिए, इससे बचाया जाए लोगों को, let's try to stop them from there. So we found a very simple solution which is digital gold. आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन आपके पास 100 रुपए हैं, आप ऐप पर गए, 100 रुपए लगाया आपने, आपके नाम पर 100 रुपए का सोना खरीद लिया जाएगा और आपकी ओनरशिप में भी दे दिया जाएगा। सिर्फ आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन आपका एजेंट जो है वो कलेक्ट कर देगा। वैसे 100, 200, 500, 1000 जब जैसा पैसा आए आपके पास लगाते रहिए, आपको तुरंत आपके नाम पर सोना खरीद लिया जाएगा और आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा उसी टाइम पे। The invoice will be in your name. It is a tax deducted invoice with a GST of 3% on it. The gold is stored in a vault. Which vault? The vault where banks' gold is stored. Where SBI's gold is stored, where ICICI Bank's gold is stored, where other big Indian banks' gold is stored. In the same vault, you will find your gold as well, which is stored. अब आपने खरीद लिया, आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया, ये डिजिटली खरीद लिया, आपको हिसाब दिखाया जा रहा है कि हाँ मेरे बैलेंस इतना बढ़ रहा है, मैंने इतना खरीद लिया। अब आप बोलेंगे भाई इसका मैं करूँ क्या? आप इंस्टेंटली उसको सेल कर सकते हैं एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, किसी भी दिन आप उसको सेल कर सकते हैं। वहां पर बटन है सेल का, वो दबा दे, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। रेट वहीं का वहीं दिया गया है। दूसरी बात, आपको इसको फिजिकल चाहिए, नहीं मेरे को सोना मेरे हाथ में चाहिए, तो आप कहां गया गोल्ड कॉइन, ऐसा गोल्ड कॉइन बना सकते हैं। ये असली है, ये छोटा है, अटक भी गया ऊपर में, पर आप 0.1, 0.5, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का कॉइन आप घर बना सकते हैं। बटन दबाइए, वहां पे अपना एड्रेस डालिए, सिक्योर्ड कुरियर से आपके घर अगर असली सोना 24 कैरेट प्योरिटी है इसकी, ट्रिपल लाइन इंश्योरेंस है इसके ऊपर, और ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। हमने इसको खोल के यहाँ पे दुबई में और कई जगह टेस्ट करवा लिया इंडिपेंडेंटली भी। एक 24 कैरेट 100% प्योर सोना, ये हम नहीं बना रहे हैं, इस्लामिकली खुद नहीं बना रहा है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं गोल्ड की वो बना रही हैं, और यही सेम क्वालिटी आपको फोन पे भी मिलेगा, पेटीएम पर भी मिलेगा। लेकिन हमने ये सारी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है इसको शरिया के मुताबिक बनाया है। सेफ्टी वही है, अश्योरेंस वही है जो आप फोन पे या पेटीएम से खरीदते हो, लेकिन हमारे प्रोसेस में जब खरीदेंगे तो उसमें शरिया कंडीशंस जुड़ी हुई है, और शरिया कंडीशंस पे इस पे ऑडिट भी होता है और उसमें सर्टिफिकेट भी आता है। Similarly, we have silver as well, so you can do gold and silver both. So we have another 5th product, which is a savings product for even small savers. 100 रुपए से आप स्टार्ट करिए और डेली सेव करिए 100 रुपए में, वीकली सेव करिए। आपने एसआईपी डाल दिया यूपीआई में, अपने आप पैसा कटता रहेगा, अपने आप बैलेंस जमा होता रहेगा। जब हमने स्कीम चालू करी तो सोना था 6600 पे, लास्ट अक्टूबर में 2024 में। Now it is 15,000-16,000. People who invested at that point in time have doubled their monies. So that's another product that we have. Next, the last product that we currently have is a revolutionary product which has come to India, which is a ULIP product. Yes, a ULIP product is linked to a life insurance product, but in the given context of India, you cannot launch a Sharia compliant life insurance product because IRDA regulations do not permit that.
IRT, let me clarify. IRTA regulations are not explicitly against Islamic insurance. उनके रेगुलेशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस्लामिक इंश्योरेंस लॉन्च मत करिए। उनके जो रेगुलेशंस है उसमें इस्लामिक इंश्योरेंस जो तकाफुल बोलते हैं वो फिट नहीं होगा। That's it. So they are not against Islamic insurance. The model that they follow doesn't fit into Islamic insurance. So let us be clear about that. Do not go away and say that कि भाई इंडिया में इंश्योरेंस लॉन्च नहीं कर सकते, हलाल इंश्योरेंस लॉन्च नहीं कर सकते। Yes, that is true, but it is the regulations are not designed against us. The regulations do not accept or are not tolerable to Shariah. That is the verdict over there. But in a unique product, there's an insurance element and there's an investment element as well. Whatever premiums that you pay, a little bit is attached to your life insurance and the majority goes to investing. The investing product is fully Shariah compliant. In 3 years, that investing product has accumulated 310 crores. The returns are 17.8% on that. That means your money will double in approximately 4 years. Approximately 4 years. Now, all the working professionals over here, all the people who are paying income taxes over here, you can invest in this product and you get tax benefit as well. 1.5 lakh rupees premiums. If you are paying, it's completely tax exempt. Yes, in the old regime. The returns that you get out of it, maturity में जो पैसा मिलेगा आपको, ये स्कीम जब मैच्योर हो जाएगी, कंप्लीट कैपिटल जो आपने लगाया और जो रिटर्न है, दोनों भी टैक्स फ्री है। सो ये स्कीम एंट्री पे टैक्स फ्री है, एग्जिट पे भी टैक्स फ्री है। आप बताएं कि भाई भैया कौन सा बैंक ग्रेड प्रोडक्ट है इंडिया में जो हलाल तरीके से चलता है? अब आपको टैक्स सेविंग प्रोडक्ट भी लेके आपके दे दिए। Do we not think that we have at least 1 lakh professionals who are working as salaried? मेरे हिसाब से तो 10 लाख होने चाहिए। 1 लाख ही मान लेते हैं। 1 लाख रुपए लगाएंगे तो हो सकता है कल हम जाके IRDA को बोले कि भाई इतना पैसा लग रहा है इंश्योरेंस में मुस्लिम्स का, आप हमें तकाफुल का परमिशन दीजिए। आज आप जाएंगे तो बोलेंगे कितना है पता ना, हलाल इंश्योरेंस में कितना पैसा है? 310 करोड़। उतने क्या बात कर रहे हो भाई, इसमें मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा? Today we have from a brand like Axis Max Life, which is a listed company backed by India's third largest bank, which is Axis Bank, backed by Max, which is an international company in insurance. It is India's largest private life insurer. And we have collaborated with them and created a product which is fully Shariah certified, monitored for its compliance, and the purification is calculated on it. It gives you life insurance, it gives you returns on investments, and it gives you tax saving up to 1.5 lakh rupees on investment, and the returns are completely tax exempt as well. What more are we waiting for? So you have stocks, you have portfolios of stocks, you have mutual funds, you have trackers of mutual funds, you have life insurance along with investments which is available on the app, as well as for small savers जो छोटी-छोटी investment save करना चाहते हैं, उनके लिए savings in gold and silver is available. Every product on this Islamicly app is certified as Shariah compliant. It is monitored for its Shariah compliance. Every 6 months our Shariah committee meets. For that matter, I am coming in directly from the Shariah board meeting. On 27th of January, we had the last Shariah board meeting in Dubai. All the Shariah scholars attended that meeting. All the audits are taken care of in that meeting. So we have to tell them what happened in gold, what happened in silver, what happened in the mutual funds, all of it. All of it. And the audit is very, very strict. Apart from the Shariah audit, we also have the financial audits which the companies themselves have to conduct as per SEBI regulation. तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट कि आपने मुझे पैसा दिया मैं पैसा लेके फरार हो गया, पॉसिबल नहीं है। मैं चाहते हुए भी पैसा लेके भाग नहीं सकता।
Even if I go bankrupt, Islamically goes bankrupt, it doesn't affect you as an investor because you are investing in those products directly. In the last, I'd like to say, very simply, Islamically app is like a grow, but only Shariah. Islamically app is possibly like a policy bazaar, but only Shariah products. Islamically app is probably like an IND wealth, which is only Shariah. Islamically app is probably like a Zerodha, which is only Shariah. That is what we are creating, that is what we are propagating, and we feel there is a massive need in the market and a lot of people can benefit out of it. Alhamdulillah, we have had close to 500,000 downloads now. Alhamdulillah, 1,000 crores plus of yours and mine portfolio is linked to our app for Shariah compliance monitoring on the retail side. And this is only India I'm talking, 1,000 crores. Let's move to the next. Switch off. Okay, I think that brings me to the end of my presentation. It is a very simple app to download. Just go to the Islamicly app on Android or Play Store. Download it. It is available. Yeah, let's move on to the next one. This is the QR code. The next. Yeah, this is very important for regulatory purposes. I have to read it out. It's mandatory. Okay, investments in mutual fund and securities are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Past performance is not an indicator or guarantee of future results. This presentation is for informational purposes only and does not constitute investment advice or a solicitation to buy or sell any financial products. Investors should consult with financial advisors before making any investment decisions. ये mandatory है because we follow SEBI regulations, we follow the regulations of the law of the land. This is a disclaimer I have to give, and it's true as well. You have to rely on this disclaimer. It's true as well. Next slide. All right, so let's build our wealth Islamically. Let's invest Islamically. Let's save Islamically. Let's grow our wealth Islamically. नाम इसलिए Islamically रखा है, इसलिए हमने कोई नूर नहीं रखा नाम इसका. हम सीधे आपको बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि ये हलाल है, ये इस्लामिक है, और इसलिए इसका नाम कोई नूर और चांद और तारा नहीं है, इसका नाम इस्लामिकली है. ये आपके लिए है. दिस इज अ प्रोडक्ट which will lead you to accumulate wealth in a Sharia compliant manner. The founders of the app is one of them is myself. Another, my co-founder is a PhD from London School of Economics. He is a UK-based fund manager. I've been working with him for the past 25 years. 20 years, sorry. Yeah, past 20 years. We also do screen the kind of products which come on the platform. We don't say it, but we do. So if there are 15 Shariah compliant products, we will not list everybody. We will list only those which we feel are conservative, are the ones which will preserve wealth, are the ones which make sense in a financial perspective, and the ones which make long-term wealth. We are not, inshallah, fly-by-night operators. We do not promise कि आप पैसा लगाएंगे तो आपको ये returns मिलेगा या वो returns मिलेगा. We just give a platform and we list all the products, and inshallah we will be working with more and more financial institutions and getting more and more products onto the platform as well. If you like what I said, please download the app, and the gold coin you can get on top, on the second floor. We have installed over there. The gold coin will look like this. We have a couple of coins we gave away. How many did we give away, Shai? We gave away 2. 3 we gave away. This is the 4th one. Please go and visit our stall on the second floor, and inshallah you can benefit from this. Let's hope this 45 minutes or an hour that you guys had the energy to look at me is worth your time and is worth your wealth as well. Inshallah. Any questions? I'm here. Oh my God, itne sawal matlab I was not effective. Thank you. Go ahead. I'm Dr. Mohammed Salman from Kerala.
PhD. So I have been invested in stock market since 2020. Currently, I am directly investing. I am using Islamicly. I'm a paid user. Thank you. Also, I am using two other apps to cross verify. And so you told me now that you presented when you were studying your presentation, you like data critical one. Actually, I have started my stock market journey through data critical one. When I open and check the fundamentals and holdings of many companies, I can see that now I have reached about 66 companies. Around 10 are not. Should I complete your question? Yes. But it's okay. For the benefit of the audience, I can go ahead. Through the AI strategy, I think they are not Shariah companies, which data difficult Okay, thank you very much for being a paid customer of Islamicly. So yeah, we have people who are paid customers over here as well, who are trusting us. The question that the gentleman here asked is, Tata Ethical Fund is a mutual fund which is certified as Shariah compliant. It is investing in a couple of stocks. The list of that stocks is being disclosed by the fund manager as well. And this disclosure is mandatory by certain regulations. Now his question is that Islamicly also screens stocks and assigns compliance and non-compliance. While Islamicly is saying that Tata Ethical Fund is a Shariah compliant product, there are stocks in which the fund is investing which are classified as non-compliant by Islamicly. तो एक लिस्ट में ये स्टॉक्स नॉन कंप्लायंट हैं और एक लिस्ट में ये स्टॉक्स कंप्लायंट हैं. How is it possible that the same company is classified as Shariah compliant in one list and classified as non-compliant in the other list? Is that the question? Exactly the question? Very good. We've been asked these questions thousands of times. One, we have to understand how stocks are classified as Shariah compliant and how the entire industry works. Now, there are methodologies using which you can classify stocks which are Shariah compliant. So, the methodology that Islamicly uses is the most popular methodology in the world, but not the only methodology. So, there are other methodologies as well that are being accepted by the Shariah scholars. So the Tata Ethical Fund follows a methodology which is different from the Islamicly methodology. These differences in the methodology will lead to different results as well. But let me tell you, the methodologies in the entire world are convergent. They are not divergent. Convergent का मतलब ये आपस में मेल खाते हैं. वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. उस कहीं के किसी के रेशियो और टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस है, बट सबकी प्रिंसिपल सेम है, सबका बेस सेम है, सब ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर बट कहीं कहीं डिफरेंसेस आते हैं. लेट्स से कोई शरिया बोर्ड्स, सम शरिया बोर्ड्स कंसीडर इन्वेस्टिंग इन डिफेंस कंपनीज as not permissible. Investing in defense companies, many scholars consider it as non-permissible. Our Shariah board considers it as permissible. They allow investment in defense companies. There are various logic. Let's say, for example, the logic behind not allowing investments in a defense company is that end product, the arms and weapons, are usually used in today's world in a non-ethical manner. कोई जंग आज के दिन में जायज नहीं लगती. हर जंग जो है वो नाजायज ही लगती है शरिया के मुताबिक. एंड एंड प्रोडक्ट अगर नाजायज है तो हम ये इंडस्ट्री को प्रमोट ही नहीं करते, इसलिए हमने ये इंडस्ट्री से दूर कराया है. That is one thought process of the scholars. The other thought process that our Sharia scholars follow is the fact that where is defense of weapons as a listed industry or as a product considered non-permissible under Sharia.
there is absolutely no mention in any of the scriptures that investing in defense, especially self-defense, is non-permissible. So there is that difference. That is one level of difference. The second level of difference also is Islamicly app is the only app in the entire world which updates its Shariah compliance on a daily basis. On a daily basis. Whereas the fund manager uses data once in 3 months. So the difference in compliances will come because of that. मेरा app update हो चुका है. The list that is being followed by the fund manager is 3 months old. Sharia scholars permit that as well because there are logistical issues in terms of holding live data. So that's second difference. Third major difference जो आता है between screening is because of quality. Quality. और मैं इसके बारे में बिंदास बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारी क्वालिटी is way different than the entire world. हम यहाँ पे हैं और दुनिया कहाँ पे पता है. Because we invest, we're a research-oriented company, we follow Sharia and we follow it seriously. So that is why the differences come. So do not worry about any of these things. If a product has a certification, go buy it. Don't worry about यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, here it is compliant, there it is not compliant. That doesn't really make a difference. The same Sharia scholars, let's take a name, okay? Let's say Dr. Abdul Hadi. He's part of one Sharia board which permits investment in defense companies. He's also part of another Sharia board which prohibits investment in defense companies. So yeah, these are small differences. Let's not be bothered about that. I hope I've answered that question. Sorry, I'll go in details because we are the original equipment manufacturers. We're just not salesmen. So I go down to the original research as well. Do they have a Sharia board? Yes. They have a certification as well and they have audits as well. So, how many companies in the world, let me take that topic up. How many companies in the world are run by Muslim managements and listed? How many? Hardly any. And even those do not qualify the Sharia screening criteria. They fail. They are not bothered about it. The second level is, if you are looking for pure Sharia compliance companies, we have researched there are only 328 companies in the entire global stock exchanges which do not have any interest-bearing debt. 100% of the revenues are Sharia compliant. All the investments are made in Sharia compliant manner. Just 328 companies in the world. Just 75% of those companies are in Saudi, and the balance are a mixture in between Malaysia, Indonesia, and the balance of GCC. India 0, US 0, Europe 0. And these 328 companies, unfortunately, are not investable as well. They don't give great returns. So, the buck has to stop somewhere. Yeah, we had a question? Yeah. Why is that? First of all, I think Islamicly is one of the only fintech Indian companies, I would say. So really glad to see that. Yep. That we have some representation from here. So my question is not related to the app itself, but rather about the industry, some fintech space. As someone who has somewhat of a background in Islamic studies, would you say we still have a room for people to get into this field? Should I pursue Islamic finance and accounting and study and get into that room? Yes, why not? Everything has, as I was attending a session in the morning, they were talking about NGOs and how they can do charity better. I heard the speakers say that in whatever you do, you need to excel. So there is room for excellence everywhere.
everywhere. I mean, if I have to give you a comparison, or let's say we're talking about a career path actually, in the classical world, which is being a Sharia scholar, an alim fazil mufti, the guys on our Sharia board, they're all millionaires. Yes. Do you have any advice for someone who wants to get into the space? Absolutely, do get into it. When I got into it, why will I say you should not get into it? When I got into it, you should get into it as well. On the scholarly thought, if you are the best, you get paid like how a McKinsey lawyer gets paid, how a McKinsey consultant gets paid, how any big consultant gets paid. Yes, they give you time for 45 minutes, and if I tell you the money, you'll be surprised. I mean, not only surprised, you will think कि भाई सब छोड़ो यही काम करते हैं. It's that kind of money. That's on one side. Secondly, as Islamic investing increases, as you can see, UTI has come up with this own mutual fund. Quantum came with the mutual fund last year. More and more such products will come. Access myself came 3 years back. There will be a need to have Islamic finance professionals and Islamic investing professionals to man these products as well. As sir recently just about now mentioned, there is a Tata ethical fund, but the fund manager is not a Muslim guy. Why? Because there may not be a qualified Muslim guy to run that fund. You got the answer? So as we propagate this, there will be a requirement for professionals as well. So why not? Not only in the product side, but just I hope to answer the question. There's What? so this is really for them making us with such an informative talk. Appreciate your advice. My question is very simple actually. For one of the challenges or nothing is that you see gradual and here as of now. While you still compare they're approaching the should develop line fund for large level and specifically probably more in the area. And I wanted to see who we further coming inshallah. Thank you so much for your emphatic comments. I see a massively bright and a J-Go thing for India. In the halal investing space, I see a massive demand. I see this coming up very quickly as well. And I see a J-Go coming up very quickly on the Islamic finance and Islamic investing space. In the last 3 years, only the past 3 years, 2 halal mutual funds got launched. 3 are in the pipeline of getting certified. So a total of 5 new ones happening. Portfolio managers looking at halal investing. I had personally met at least 20 to 25 large portfolio managers who are managing a Shariah compliant portfolio now. And these portfolios are running in thousands of crore now, not hundreds of crore. They are now running in the thousands of crore. Axis Max Line and Motion Halal product, which is on the insurance side. Similarly, Bajaj is looking to do something. Similarly, Tata is looking to do something. So it is all coming up. It's all coming up. It is because we are asking them for it. Who's asking them for it? The professionals who are working. When these distributors come to there, we ask the person, is it halal? They are then going back to their providers and saying, "Bhai, halal hota kya hai?" Let's sell halal products, and they also ask, "Apne products mein se halal kaun sa hai?" And the closest one, which is let's say only pure equity, not in halal stocks, pure equity, wo nature nahi, wo interest nahi, wo gam nahi, avi हमारे लोग खरीद ले नहीं हो. So we do have some participation, but it's not obvious. So yes, awareness is low. People like us are working. Why are we here? Is to create awareness. Why are we investing in forums like this? Is to create awareness. Why did we create this nominally? Is to create awareness. If you see, half of the effort on the Islamicly app side is on awareness side. I do
tens of webinars every month on my channel of our YouTube. This year we will be even more. We look at physically doing now. I answered more than 17,000 questions in the last 5 years. I personally have answered those questions, 70,000 questions. They go, what is your investing, how we do it. I don't talk about where do we make money. I talk about the principles of investing from Halal Book Fair. So I do see a massively bright future for these products. I do see that if we don't take part in this, even this industry which is earning money from us, possibly will get hijacked by them. So for the youngster life, we keep telling them, I'm next target that predict what will be the next 12 years. I say, become financial advisors. You know Muslims. Muslims know you. Muslims need to invest. Muslims don't know where to invest. You become a financial advisor right after college. Simple exams to pass. Get a certification. Sell mutual funds. Sell investment trusts. Sell portfolio stocks. Get a consultant fee. So massive career. Massive class career. It's completely working. And definitely if all youngsters go on to it, they will come and grow. For sure. Thank you. Would Lili's better in continent in one hand of America? Let's take that. Thank you. And the house should modern coming in the red at the bottom of some piece of my body in your child, weakness of golf, or chip on a hair last club. Thus, there's the something you're not book. Assalamualaikum. Vibes na yeah, uploaded in yay. What is the yours? Ever with the city platforms thing. Net half what's the one we feel people don't bag and while the say I'm still I am surprised if I described to you. Thank you, man. ETF एक लिस्टेड प्रोडक्ट है. ETF जो है वो लिस्टेड प्रोडक्ट है. इसेंशियली एक फंड मैनेजर सोना खरीद लेता है और उसको यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में 10 रुपए के हिसाब से वो सेल करता है. फिर जो वैल्यू बढ़ती है वो बढ़ती है. तो ETF इज अ मार्केट लिस्टेड प्रोडक्ट, वर्क्स लाइक अ सिक्योरिटी. जैसे स्टॉक काम करता है वैसे ETF भी काम करता है. तो ETF जो मोर देन सिल्वर की ETF है, सर्टिफाइड भी तो इंडिया में नहीं है, जो शरिया कंप्लाइंट है, बट उनका जो पॉलिसी है जैसे वो हम चलते हैं वो हलाल तरीके पे ही चल. जो उसके वो मेजर चीजें हैं कि भाई असली सोना फिजिकली उनके पास होना चाहिए, बेचने से पहले वो उनके पास होता है. और जब आप खरीद लेते हैं सोना वो आपके नाम पर होता है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं. तो जो आपने सर्टिफिकेट यूनिट किया है वो यूनिट आप अगर बेचेंगे मार्केट में तो उतना सोना आपको मिलेगा. तो वो शरिया कंप्लायंस चीज है, वो मार्केट रिलेटेड है. हम तो हमारे जो चीज है वो फिजिकल है. ये फिजिकल सोना है. आपने दुकानदार को 100 रुपए लिए समझ लीजिए और उसने 100 रुपए के सोना आपको है. हमारा वाला सिस्टम ऐसा है. फर्क इतना है कि दुकानदार आपके सामने नहीं बैठा है, दुकानदार पीछे बैठा है. आपने उसको पैसा दिया और इंटरनेट से उसने आपके नाम पे इनवॉइस दे दी और आपका जो एजेंट है, जो वर्ल्ड कंपनी है जहाँ पे सोना पड़ा रहता है, वो आपका एजेंट है. आपने उसको बोला कि मेरे तरफ से आप ये सोना उठा लो और वॉल्ट में रखो. आप जिसको जब भी सोना चाहिए वो सोना या तो आपको गोहान गिरवा करना चाहेगा या आप उसको सेल कर सकते हो, पैसा दे सकते हो, या ज्वेलरी स्टोर में है जैसे कि कंगना ज्वेलर्स है, बड़ा ज्वेलरी स्टोर है, मलरो ज्वेलरी है, वहां जाके मतलब बैलेंस दिखाएंगे तो उतना सोना आप दुकान से ले सकते. उसके ऊपर निजी चार्ज दे देंगे और सोना वाले है. जैसे कि आपके दूर करे से 25 ग्राम सोना आ गया, आप ज्वेलर्स गए, आपने 25 ग्राम का कोई ज्वेलरी मसला कभी 25 ग्राम इसी से माइनस होता है और उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस होता है और लाख को देने पड़ेंगे वहां. तो ये कंप्लीटली फिजिकल है. और ETF वहां पे वाला स्कीम होगी. ETF सस्ता होता है, ये महंगा होता है क्योंकि इससे GST लगती है 3% भी. ETF वाला प्रोडक्ट इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है जो होती ना होता है, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के लिए है और ये सेवर्स के लिए है. मैं समझ रहा ये वाला नहीं, सिर्फ इस तरह से आएगा. ये क्वेश्चन आफ्टर रिसर्च एंड सॉल्व सलाम नको
MashaAllah. No more questions? I bring to not taking any more questions. No, it's been a long time to show. If you have any questions, please approach the team off stage. You'll be happy to answer more of your questions.